सर जेल के बारे में आप क्या जानते हैं? सर जेल के बारे में ज़्यादा लोग कुछ नहीं जानते हैं। एक दफ़े का जिक्र है कि 1972 के अंदर हम एक समाज सेवक की ओर से एक कार्यक्रम था, उसमें था धरना आंदोलन। तो वह आंदोलन के अंदर हम लोग जुलूस नहीं निकाले, तो महंगाई के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, लेकिन उस आवाज़ के उठाने में हमको गिरफ्तार कर लिया गया। तो समाज की सेवा करते करते 2-3 दिन हमने जेल में हेगा लिया। फिर वहाँ जाने के बाद फिर मुझे माँ की जो कहती उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि आज तो आ गए भैया, आप जमा जाना। मतलब कुछ माहौल ऐसा बोले कोई जगह अच्छी नहीं है। जब भी जेल का नाम आता है नहीं तो बड़े से बड़ा गुंडा हो कोई भी होए वो पनाही मांगता है गाँव। वो कितो हमारे मेले में सुना है मैंने ऐसा कि जो भी छूट का आता है नहीं तो वो बोलता है कि जहन्नुम से कम नहीं है यार, ये बहुत ही भयानक बताता है और भगवान बचा इससे। तो बाकी तुम दो ही की बात से तो सहमत हूँ मैं। क्या बाकी जो जेल का काम है ये बता रहा है सर्रू भाई और या बाबू भाई हमारे जो है। बाकी इससे क्या है कि एक इंसान जो मुजरिम रहता है उसको सजा इसलिए दी जाती है कि वो सुधर जाए। जेल का मतलब ही ये रहता है कि वहाँ जाके सही हो जाए वो, इसलिए सरकार उसको सजा देती है और इसलिए उसको सख्त बनाना चाहिए, क्योंकि सख्त रहेगी तो आदमी उससे डरेगा और डर के वो आगे बाहर निकल के वो काम नहीं करेगा। This man is serving a life sentence for murder. Murder? I'm sorry, I'm a little body conscious, as you can see. I've gained a few pounds. A dip in the frozen lake behind the prison is part of his regular workout routine. Okay, your turn. Welcome to life in one of Finland's open prisons. There are no cell blocks here, just dormitories. Inmates come and go in their own cars. When Matti isn't at the nearby university campus, he's in his dorm room, studying for a career in tech. Some books, marketing books, user experience, digital and IT studies. And we have this kind of normality principle that prisoners should be treated equally, even though they are prisoners, but they should have access to same services and rights as other citizens. In recent years, Finland has been named the happiest and safest country in the world. Citizens here enjoy generous public benefits, universal healthcare, subsidized daycare for children, and free college tuition. Promotional films like this, produced by Finland's Criminal Sanctions Agency, document how prisoners are eased back into society, with work opportunities and help from counsellors. And the incarceration rate here is one of the lowest in Europe, a quarter of what it was in 1950. In Finland, only 1 in 3 former convicts ends up back in prison. Compare that to the United States, where 2 out of 3 get locked up again within 2 years of release. A 2018 bill included sentencing reforms meant to reduce what is referred to as recidivism, but they only apply to inmates in federal custody. Just 10% of the 2.3 million people incarcerated in the US. Critics say the 2018 reforms are only a small first step and fall far short of the kind of meaningful change Finland is so proud of. The scale, of course, is different. Today there are fewer than 3,000 in the Finnish prison system. The number of people behind bars in the US is equal to half of Finland's total population. A reimagining of what prison looks like here started nearly 70 years ago, when this Scandinavian nation began building one of the most humane systems in the world. In some of the latest steps, Finland's Criminal Sanctions Agency is investing heavily in technology training. The first topic is AI, then the second topic, problem solving with AI. And building a state-of-the-art smart prison. And even testing VR to provide an escape from the drab walls and fluorescent lighting of Turku, Finland's highest security closed prison. Mika, who is 10 years into a 15-year sentence, is walking through a 3D forest. He appreciates the chance to interact with VR technology and learn the basics of working with computers. Lisän vielä tämän verran, että tämmöisiä vankeja, ketä on välillä käynyt
vapaana ja tullut takaisin, niin on sanonut ihan suoraan, että ei siellä pärjää, niin kuin, että siellä on niin paljon erilaista tämä kaikki niin kuin tämmöiset, että kaikki on niin paljon tietokoneistettua. Että olisi hyvä saada sitä oppia. We try to educate the prisoners to use digital services in a meaningful way. So मैडम बहुत बढ़िया काम कर रही हो आप. help them to rehabilitate, that help them to take care of themselves and take care of their daily affairs. And जेल का मतलब ये होता है कि जो मैडम आप कर रही हो. बिल्कुल सही बात है. You reintegrate back to society. Now Finland is investing in the infrastructure to support that readjustment. बड़ी फैली हुई है यार. €34 million prison that many hope will set the standard for the future. Bars, glass windows, an internet connection in every room, and small touches meant for comfort. This is our specialty. Yes. When it opens in this fall, the brand new facility in Hämeenlinna is expected to be Europe's most high-tech women's prison. But just across the road, a reminder of the past. The old facility, built in 1972, once housed both men and women. It shut down in 2019 after years of disrepair, mould, and other reasons. This was before toilet. And where did they empty it? I take this and look there. The smell was... And just a few minutes' drive away, a relic built in the 19th century and modelled on the American style of prison that is still widely in use today. Cell blocks arranged in a radial floor plan, prisoners living in solitary confinement. This one is a museum now, preserved to show just how hard prison life here used to be. For Matti, the road to reform has led him to a career that he would never have dreamed of before. He connected with Reactor, a digital agency that designs online education courses. When they heard he was participating in this story, they invited him to give some feedback on the program. How did you think about the first course? What do you see? What was your general impression about it? It was shown quite simply what is AI, what isn't AI. So that was really good, and kind of like show that it's not about magic. Seeing him in this meeting, it's easy to forget that Matti is still serving out his sentence for murder. In that time, he hopes to complete a university degree and start a business. One way to get kind of like employed is, of course, self-employment. So, and a lot of prisoners have already the entrepreneurial mindset. Based on Matti's recommendations, Reactor is planning to add an entrepreneurship course to the prison curriculum. It has like enforced my trust in also like this Finnish prison system, where like giving chances to put people like you, like it's awesome. After the meeting, Matti heads back to Louka prison. But he is excited for the future. At the beginning of my sentence, I thought that there can only be negative things in being in prison. That basically life is over. But I think you should give people a chance. That's the most important thing. सही है. पैनल वाला बहुत अच्छा काम कर रहे भैया यार. बहुत बढ़िया. क्या बात है वाह. वाकई में जेल का असल मकसद यही होता है. कि आदमी तौबा कर ले. सुधर जाए. क्या वाकई में ये वीडियो देखी मैंने, देख के वीडियो बहुत अच्छी लगी, और इससे मैंने सब 2 बात का अंदाजा लगाया है कि ये जो फैसिलिटी जो जेल में दी गई है कि इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा पीना, और पढ़ लिख के आना बाहर और अपना आपको सुलग लेना, ये दूसरा ये कि जिन लोगों को इस फैसिलिटी नहीं है और इस बारे में कोई जानते नहीं, वो तो ये बनेगा चलो ठीक है कोई भी जुल्म करे और जेल चले अच्छे पकड़ दो, खाते को मिलेगा. क्या बात कर रहा है, फोकट में मुझे बन जाएगा. बन जाएगा. तो ये
हाँ यार ये बात तो है, इसमें इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही है इंसान को, तो कोई भी अच्छा वाला इंसान मुजरिम नहीं बन जाए। हाँ यार ये वो ऐसी जेल देख कर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया यार, कैसी जेल भी रहती थी, सुविधा भी मिलती है उसमें। बाबू भाई खैर आपने जो दूसरी बात बोली वो तो हंसने की बात थी। बाकी मेरी बात सुनो, बाकी जो आदमी जुल्म क्यों करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसके कहने पैसों की किल्लत आ जाए, है नहीं, रोजी रोजगार नहीं रहा उसके कहने, बिल्कुल इस कारण वो जुल्म करता है। और ये जो दिखाई सन्नापन को वीडियो, क्या इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि इसमें पढ़ लिख के कुछ बन के बाहर निकलेगा आदमी। सही है। क्या वीडियो मैंने देखी है, इस वीडियो के तरफ से एक सिचुएशन जो इसमें दिखाई है, उसके ऊपर मेरे को ये गाना ये याद आ रहा है कि एक आदमी बाहर विदेश की जेल में बंद है और उसके घर वालों जो चिट्ठी भी भेजी वो चिट्ठी वो इस तरह पढ़ लिया, वो आप चिट्ठी सुनिए। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बहुत दिनों के बाद हमने दिनों को याद उतन की मिट्टी लाई है, चिट्ठी आई